Take a long in and breathe out completely. Take another long breath in and breathe out completely. Now breathe in to chant Om. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityurmokshe Yamam Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amrutagamayam. Hari Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryasu Sarvada. Om Shanti 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 Hari Om. Yogena Chittasya Padena Vacha Malam Sarirasya Cha Vaidyakenam Yopa Pravaram Munina Patanjali Pranjali Ranutosmi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururevo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasme Shri Guruve Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Namo Narayanaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Venkateshaya. Jai. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Om Sri Namaste Namaha. Jai Shri. Go down, Mata, Pita, Guru, Atithi. So pranam all the text, all the spiritual text which brings us to the knowledge or wisdom to all the Vedas. Namaste. And the ultimate goal of human birth is getting moksha, union of Atman and Brahman merged to supreme consciousness or Brahman, and will relieve from the birth cycle. Suman ma'am also joined. Hi Suman ma'am, good morning. Good morning everyone. Good morning sir. Today little bit I'm taking the topic of Chitta only. Okay, so anything related to mind. Okay, so for that, as I previously told, how much you are clear with Patanjali Yoga Sutra, this chapter will be that much easy for you. So understanding it completely based on Chitta. So already you know little bit yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. So first question for Kala ma'am. Kala ma'am, what is Chitta? What constitutes Chitta? Chitta means mind and total mental field. Okay, no, what it contains, what it constitutes. It contains 3 levels: Manas, Buddhi, and Ahankara. Bahut badhiya. Very good. Okay. So now we'll go to the topic. Chitta 1.2, right, sir? 1.2 Patanjali Yoga Sutra 1.2. And Suman ma'am, Chitta Bhumis क्या है? Chitta Bhumis है sir, Kshipta, Mudha, Vikshepta, Ekagra, and Nirodha.
बहुत बढ़िया मैम, वेरी गुड. ओके ज्योति मैम, out of these 5 Chitta Bhumis, which two are very suitable for meditations? I think I have not done this. Oh, you are not. Okay. But if you listen that wordings, right? Ekagrata and Nirodha. Okay, these two only will leads you to the meditation. Rest are not possible because if you are disturbed, you are distracted, you are dull. Okay, anywhere it is not possible. Okay. So anyway, I'll start from scratch. So no worries at all. But yes, you have to also go through that Patanjali Yoga Sutras. What I'm putting basic thing in the group, right? Just go through that. It's more than enough. Now. So, concept of Chitta. Okay, so if you see Patanjali Yoga Sutra, which was composed by Maharshi Patanjali in the classical period. So his all Patanjali Yoga Sutras is more on Chitta, more on mental aspect, more on discipline, more on 8 limbs of yoga. Okay, कौन सा है 8 limbs? Yama, Niyama. Yama, Niyama और Asana pranayama. Asana, Pranayama. आसना प्राणायाम और Pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. बहुत बढ़िया. सो आई थिंक ज्योति मैम थोड़ा आप सुने होंगे कि 8 लिम्स ऑफ योगा, आसना, सॉरी, यमा नियमा, आसना प्राणायाम प्रत्याहार, जो बहिरंगा में आता है. अंतरंगा में आता है आपका धारणा ध्यान समाधि. ओके, मेंटल एस्पेक्ट में. तो आज उससे हम थोड़ा पहला पतंजलि योग सूत्र जो है 1.2 जो इनिशियल स्टेज में है चैप्टर 1 का, उसमें है योग चित्त वृत्ति निरोधा. तो जैसे अभी कला मैम ने बोला चित्ता इज, इंग्लिश में हम सिंपली माइंड बोल देते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली माइंड, इट्स द माइंड फील्ड एक्चुअली. एंड दैट माइंड फील्ड कंटेन्स 3 थिंग्स: manasa, buddhi, ahamkara. For short form we have put it as MBA. Okay, manasa, buddhi, ahamkara. So thinking, intellect and ego. So buddhi and ego, ahamkara. Okay, so it stores impressions, samskara. अगर आप देखेंगे चित्ता जो है, आप जो जगह में टाइम स्पेंड करते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कुछ आप एक गो थ्रू किए पास्ट में. सो नाउ इट इज ओनली स्टोर्ड, दैट इंप्रेशंस आर स्टोर्ड इन चित्ता, एंड नाउ यू आर जस्ट रिटेंसिंग दैट, एंड दैट इज नथिंग बट स्मृति. करेक्ट, स्मृति के बारे में बताया गया था. दिस इज वन ऑफ द वृत्ति. पंचवृत्ति, ज्योति मैम बता सकते हैं पंचवृत्ति जो चित्त वृत्ति बोल रहे हैं, वृत्ति में 5 है, कौन कौन सा है? दिस आई थिंक मैंने किया है. विपर्य, विकल्प, ये निद्रा, स्मृति, यही है ना? यस. सो व्हाट इज राइट नॉलेज? pramana. Knowledge of something which is correct, corrective. Yeah, that correct. is pramana. Okay, Yeah. as per Patanjali Yoga Sutra, pramana. Second, Incorrect knowledge is viparya. viparyaya. Next, Imagination is vikalp, yes, and deep sleep is nidra yoga. nidra, one of the vritti And where absence of recollection. object, and smriti, as I told, just it's chitta. In chitta, right, the impressions, you went to a place, you meet someone, And you have done memory, right? that impression is stored in chitta, and you are retentioning that, and that is nothing but smriti. Okay, now chitta vritti, modification of mind. Okay, monkey mind, jumping here and there, or you can say one of the other modifications of your mind or chitta. So depends on Patanjali Yoga Sutra, defined in Patanjali Yoga Sutra 1.5. Okay, pramana 1.5 and 1.6, I believe. Okay, 1.5 and 1.6 both speaks about this. 1.5 speaks about pancha vrittis, chitta vrittis, and 6th, I think it will explain detail. So pramana is the valid knowledge, viparyaya is the wrong knowledge, vikalpa is the imagination, nidra is one of the vritti where absence of object called sleep, smriti is memory, like you have spent some time and that impressions are stored in your chitta or mind, and now you are recalling them or retentioning those.
So that is nothing but your. So here you can say not exactly 1.5, but 1.5 and 6 both speaks about this. So 1.5 only says it's klishta or aklishta. So look at the Patanjali Yoga Sutra. You'll get direct questions also with serial number. So look, because it will help you out. Vrittayah panchatayah klishta aklishta. So vrittis are 5 types. Okay, there are 5 types vrittis. So some are painful or some are non-painful. Or klishta means painful, aklishta is non-painful. Okay, next we'll go to Patanjali Yoga Sutra 1.6. Patanjali Sutra 1.6 speaks about exactly what are the 5. So those 5 are Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritaya. Means the 5 vrittis are right knowledge, wrong knowledge, imagination, sleep, and memory. Okay, so this is which sutra? 1.6. Okay, next. Now, constant fluctuation of mind disturbs peace. So if fluctuation is more, generally it is for all who are not in the path of yoga, dhyana, pranayama, meditation, for them all. Okay, this disturbance of peace. Next, Chitta Bhumi. Suman ma'am told today, right? So states of mind. Chitta Bhumi is not nothing but different states we have, and those are our states of mind. So one is Kshipta. Kshipta is restless. Mudha. Mudha is dull. Vikshipta. Vikshipta is distracted. Ekagra. Ekagra is one-pointed. Nirodha. Nirodha is controlled. Okay. So out of this fourth Ekagra and fifth Nirodha, these both are suitable for meditation, dhyana, samadhi stage. But these 3, restlessness, Kshipta, Mudha, dull, and Vikshipta, distracted, these all are not suitable for meditation. So our ultimate goal of yoga is to achieve the Nirodha state. So if you are achieving Nirodha state, then definitely it is helpful. And no worries in writing the notes. I'll share this. Okay. Next, 1.2. You just note key points. Rest I'll share the note. Okay. So yoga has chitta vritti nirodha. So if you are achieving the nirodha state, the control state, all your vrittis are under control. You are one-pointed when you are focused. Okay, and you are looking into further, then automatically your samadhi will work. Next. So, but control of your vrittis or control of your vrittis of the chitta, and that is nothing but 1.2. Okay. Next. So what is the chitta vritti connection is? The lower uncontrolled state of mind is Kshipta, Mudha, and Vikshipta. Okay. So when you are in Kshipta, Mudha, or Vikshipta, meditate. And what is the one thing that is like higher states? Ekagra, and the ultimate higher state is Nirodha. So in these states, we can do meditation. Which doubt? Any doubt? No. Next. So already this we discussed. Restlessness, highly distracted and active mind is Kshipta. So आप अगर राजसिक फूड खा रहे हैं, राजसिक अन्न ले रहे हैं, तो हाईली डिस्ट्रक्टेड एंड एक्टिव माइंड रहेगा, तो वो दिक्कत होगा. मुद्दा डल, इनएक्टिव, इग्नोरेंट स्टेट. तो आप जब तामसिक अन्न लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इनएक्टिव इग्नोरेंट स्टेट रहता है. विक्षिप्ता, ओकेशनली स्टडी. सो इट इज लाइक आपका रजो कभी कभी हीट करता है, तो if you'll do meditation and all, it will come. So sometimes it will focus, but it's a mixed state. So this is also not suitable. Next, when your dharana, dhyana, and coming, so dhyana stage, you are achieving this one, ekagra, one-pointed, concentrated mind, and nirodha, fully controlled. When you are in samadhi and all, right? So that is complete stillness of mind. So yoga practice is restlessness to ekagra, one-pointedness, from one-pointedness to controlled mind, Nirodha. So Chitta Bhumi describes states of mind, and yoga aims at achieving Nirodha state through control of mental fluctuations. So आपको वाइवा में पूछा जा सकता है चित्त भूमि क्या है, तो these are stages of mind which helps us, or the ultimate goal of yoga, to achieve Nirodha state through control of
vrittis. So move to disturbed states to Ekagra or Nirodha. Next, Chitta Vikshepa. Fourth one, mental distractions. Okay, so Patanjali Yoga Sutra 1.30 speaks about this. So what are they? Vyadhi, Alasya, Samasya, Pramada, and again distraction, lack of focus. Okay, so I think there are 9. there are 9. Chitta Vikshepa. I Okay, saw somewhere. okay, we'll check Sir, that also. which But sutra, sir? but as of now, I'll go to 1.13. Patanjali. हाँ मैम, I'll go to Patanjali Yoga Sutra 1.3031. It will cover everything. No worries. So ma'am, your Patanjali Yoga Sutra 1.31 will cover that. No worries. Okay. So Jyoti ma'am, you also look at this. Okay. Vyadhi, disease, alasya, laziness, samasya, doubt, carelessness, pramada, and vikshipta, lack of focus. Okay. Distracted. So directly we'll look into the Patanjali Yoga Sutra first. व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ओके, अविरति, भ्रांति, दर्शन, ओके, आलब्ध, भूमिकत्व, ओके, अनन्वस्थि तत्वनि, चित्त विक्षेप्स ते अंतराय. Okay, See, so there are 9. okay, there are 9, right? Okay, so even 1.31 also little bit speaks on this only. So anyway, it's covered in this. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Sir, Vyadhi, Sthana, Samshaya, Pramada, Alasya, Avirati, Bhranti Darshana, Alaptha Bhumikatva, and Anavasthitatva. 9. Totally, there are 9. Okay. Okay. So these are the obstacles or antaraya that cause destruction of mind. So chitta vikshepa is happened due to the obstacles or antaraya. Okay, first one, as Kalam told, vyadhi. Next is sthana, mental dullness. Next, doubt, samasya. Next, pramada, carelessness. Next, alasya, laziness. Next, avirati, over attachment. Next, wrong perception, bhranti darsana. Okay, after bhranti darsana, next is alabdha bhumikatva, lack of progress. And next is anavasista tattva, means instability. Okay, anavasti anavasti Anavasthitatva. anavasti tattva. Anavasthitatva. So anavasti tattva is instability. Alabdha bhumikatva means lack of progress. Bhranti darsana, this you can understand, wrong perception. Bhranti means wrong, Hindi mein hai. Avirati, over attachment. Virati, avirati is also like progress and non-progress, but here it is avirati is over attachment. So attachment, detachment we know already. So over attachment is Over indulgence. okay, avirati, and rest all you know almost because that is directly available. Only sthana is mental dullness, so this is little bit new, and rest all you know. As per Hindi, it is matching. So these disturb concentration and hinder yoga practice. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, I'll delete those 4 and 5 because it is, I thought in 1.31 also this topic covered, but all the 9 are covered in 1.30 only. Okay, next, Yoga Sutra 1.31. Dukkha dormanasya अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः दुःख दौर्मानस्यः अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः.
So there is a symptoms of accompanying mental distractions: dukkha, sorrow; dormanasya, depression or sadness. Okay. Anga ma jayatva, restlessness of body. Anga me jayatva. Next, swasa praswasa, irregular breathing. Actually, swasa praswasa is inhalation, exhalation, but in this sloka it is saying irregular breathing. So when it is not a regular breathing, definitely that also will indicate a disturbed mind state and you are not focused. Okay. So 1.30 sutra explains about causes, obstacles, and sutra 1.31 explains about symptoms of disturbed mind. So Chitta Vikshepa are obstacles in yoga, and their symptoms reflect mental and physical imbalance. Okay, disturbs concentration and peace. Okay, so disturb, when you are in disturb, it will disturb your concentration and peace. So that's why those things are discussed. Now, I think this one we discussed in one of the class. So still I want to repeat. Chitta Prasadanam, mental purification. So there are 4 attitudes: Maitri, friendliness; Karuna, compassion; Mudita, joy; Upeksha, equanimity. Okay. And one more is there: Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. 4, right? 4. Yes. 4 are the attitudes. Okay. So these yogic qualities, these yogic characteristics are definitely required in order to do mental purification. You should be happy and your mind will be pure and sattva. Okay? So what is the Patanjali Yoga Sutra? 1.33. Okay. Maitri, Karuna, Mudita, Pekshana, Sukha, Dukkha, Punya, Apunya, Visayanam, Bhavanatah, Chitta Prasadanam. Okay. So Maitri is friendship or friendliness. Okay, one question or 2 questions will get in this area. So be careful. Okay, friendship or friendliness; Karuna, compassion; Mudita, joy in others' happiness, others' success; Upeksha, equanimity or neutrality, means ignore the negative element and make yourself equanimity or neutral; Sukha, happiness; Dukkha, suffering, sad; Punya, virtue, good deeds; Apunya, sin or wrong actions; Bhavana, okay, Bhavana is attitude or cultivation; and Chitta Prasadanam means purification and calming of mind. Prasadanam is calming the mind. So the full meaning: the mind becomes pure, calm and peaceful by cultivating attitudes of friendliness, compassion, joy, and equanimity towards happy, suffering, virtuous, and non-virtuous beings. Okay. Any doubt, ma'am? In 1.33? Already you know this. Only Sir, just, ma'am. Yes, ma'am. can you provide me with all the notes? I don't have any notes. I mean, I used to attend the classes, but Okay. classes के बाद जो notes मिलने चाहिए ना, वो मेरे पास एक भी नहीं है. So उससे है ना, वो relate करने में मुझे I think problem हो रहा है. You are in I want, YWI group, right? I'll share today. You can download. Okay? yes. I'll share in the WhatsApp group today. After every class completes, I'll No, share. no. After every class completes, you will share today, Kana. I want previous wala also, Sara. It's Okay, already I no don't there in have the group. anything. It's in the already group there. also, there, and I'll share you individually if you need. Yeah, Okay. you send me personally, huh? Okay. And Thank you. whatever Kala ma'am and Suman ma'am you have, you can also share her. Individually share कर दीजिए और she can look into that. And ma'am आपको अगर चाहिए उसमें कुछ explanation चाहिए, I'll help you out in that. Okay. No worries. हम लोग एक सैटरडे संडे बैठ जाएंगे and we'll do a quick revision on what you have studied or what you missed and all. So you'll be in the same pace. Okay. No worries at all. Relax. But what I got is your faculty, ma'am, is not doing well much, so that's why she cannot continue more. That's what she. No worries. So that's why Deepak sir handed me ki take her batch. So better ki I'll merge you to this batch only because in this batch Suman ma'am
Started just last 2 weeks back only. So in that way, no worries at all. Okay. And Feeling very good, sir. Women power. sorry, ma'am. I'm saying it's feeling good. Key, one more joined. Women power. Ah, yes, ma'am. Sir, we have attended Chavi ma'am's one class Okay. and we are not satisfied with that. Okay. So, Maybe like sometime what happens is you are stick to one faculty. When you are changing the faculty, right? Sometime you may not like when Rishabh sir resigned, right? No, From sir. YB. It was not like. It was Jyoti ji can not. tell better. No, it was not that kid. That only one class she was talking about Samkhya. The first, I think, the first thing she should say was Kapila. She didn't mention that at all. And that what is that dualism? She didn't mention. These are two important points which she didn't mention. So No worries. Sometimes what happens is people have knowledge, but they don't know how to express, or maybe they expressed, but we are not thinking. Or sometimes, see, in my class also, you'll get some fault. But I'll say you one thing. I'm using the Gadha method. Gadha method means I'm a backbencher. I know how to pass my engineering exam. So that reverse engineering I'm applying here. So I'll say one thing, pakka. You see, after 3-4 months, exam will qualify aramse with a good score. Knowledge wise, but I'll tell you, mine are very it's shortcut. it's easy to find fault in anyone's class, but the plus point in you is you do your homework at home. You do you do your best to provide the best to us. Yes. So Yeah. fault that's human. Error is human. Yeah. And one thing also, ma'am, you shouldn't depend on me also much. How I'm telling you. You got the L2 guidebook. In that, right, this one concept is 10 pages. So you cannot read 10 pages. But where you want to know more, like some point you want to dig more. So you can go through that. Today it's an information age. Ask Chat GPT. Explain me all 196 Patanjali Yoga Sutras. So at least every day you take 4, 4, 5, 5. By 3 months, you'll complete all the 195 with meaning, with knowledge, practicing multiple times, listening that video. Definitely it will help. So best thing is, if possible, we can do group studies sometimes, whenever possible. Yeah, sure. It will. Okay. So And do we need to give written exam also or the Viva presentation only? The Viva and no. You have to go proper MCQ test, which is 60. MCQ test. Okay. That is just 60 But, questions, sir, 60 you marks. will give us mock question papers also, no? Actually, telling you a fact, every paper we are doing a mock or MCQs. So separately you don't need. But one thing is, ma'am, Jyoti ma'am, I don't know about you, but Kala ma'am and all are Gopinath ji and all. My students are writing notes that contains 20 marks. So don't miss it. From day one, whatever you know, keep everything. And today only Kala ma'am told before you people join. Every asana also will again do a charcha. Charcha means you are doing in the practical class, it's okay. But what I want you to know is do brainstorming in theory class. Okay, this particular asana, okay, good for diabetic. Okay, this asana, good for diabetic, but BP and diabetic patients should avoid. Okay, this So is the when benefit. the practical class will be starting for us? Practical class, it is multiple slots are already going on. Some teachers are taking. No, I we think can join eight. randomly anytime. I don't know, but I think Yes. You can join. okay, I That's the think thing, and the timing also she has shared. uh, 4 to 5 sessions are going on. You can join one. But what I'll help you people as a theory faculty, I'm telling you, each asana will discuss here. Brainstorming will do comparing what is benefited, what is not benefited, what is the counter position. Okay, what is the indications, what are the contraindications. You do such a brainstorming, maximum Viva questions we can answer from this brainstorming and MCQs. But when demonstration comes, you have to practice. There is no other choice because they want to see also 4, 5 asana from you. They'll ask you one or two asana, teach for 5, 10 minutes. They look to you. Teach. When, so, when we attend practical classes, we get only the practical session.
Like this, the contraindications, we don't get that. Okay. Yes. So it is important So, for us so, to know. so It is I think better that sir only Okay. teaches after the. I'll take care of that. Okay. I think I'll there take are care of only that. if we can take 2 asanas per day and we can discuss about that, it will be helpful. Okay. See, I'm telling you one thing. I'm a backbencher, but my scores will be good. Why, you know? But now you are a front bencher, sir. No, no, no. Still, अरे सर, no, हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता ना, तो वी फॉर अस यू नो एवरीथिंग. व्हाई आर यू ऑलवेज कॉलिंग योरसेल्फ बैक बेंचर? no. I'm telling every time in class and all, my presence will be not good. But when the Now, results comes, now it's time to remove that. Sir, we have to have the confidence of whatever we know. That is the yes, ultimate thing. correct. अदरवाइज वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास भी आएंगे ना, दे विल थिंक कि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो इट इज. Means how I'll tell you is here backbencher actually is not a negative word. I'm telling that a person, okay, with a strategy in last 1-2 months, we can score good in semesters. So Sir, that thing, sir is saying being a backbencher, you are on the top. That's what you are trying to say. I'm saying with less effort and with the tricks. I'm telling you, Patanjali आई Yoga. सर, इसीलिए मुझे बहुत हेल्प चाहिए आपका, बिकॉज आई बेरली हैव टाइम टू अटेंड दी क्लासेस, ओनली थ्योरी वाला. आई डोंट नो मैं प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे मैनेज करूंगी. एंड आई हैव रिक्वेस्टेड छवि मैम कि आप मुझे 15th May तक ट्राई टू कंप्लीट माई कोर्स. सो अकॉर्डिंगली 15th, शी मे. 15th May. Okay. So she had given me that assurance that जो भी important pointers है or something है, she will be able to complete, because 15 May से 15 June तक again this time I won't be able to attend the classes. So it is very very difficult for me. I am just Okay. attending the classes Weekend can you because attend? Sometime weekend can you attend? Weekends? weekends. हाँ, but different timings. फिर ये timing will not be नहीं suitable. नहीं, आप मुझे पहले Evening. पिंग कर दीजिए. कला मैम को और सुमन मैम को भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि बोथ कैन ज्वाइन. हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे पर सैटरडे हमारा संडे ये 1-2 कब आवर. तक खत्म हो जाएगा, द कोर्स? कोर्स मतलब एक स्पाइरल मॉडल है, कोर्स चलता ही रहेगा. आपका इंडिविजुअली आप जब ज्वाइन किए हो उसका रफली मान के चलिए 200 से 60 मार्क. तो 1/3 ऑफ द 400 आवर्स इज रफली मान के चलिए एक दो 120 क्लासेस लाइक अगर आप ले लिए तो 20 to 140 क्लासेस ले लिए तो थियोरी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तब तो ये होगा नहीं 15 मई तक. तो मई 15 तक नहीं होगा, बट नो वरीज. अपना वीकेंड में जुड़िए. जो जो चीजें हम किए हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे सपोज सुमन मैम कला मैम जो ज्वाइन किए हैं, वही चीजों का मैं एक रिव्यू कर दूंगा वीकेंड में. सो व्हाट हैपेंस इज यू विल नहीं, बी अप टू ये मार्क. ज्योति जी 15 जून के बाद की भी बात कर रही है ना. यू कैन ज्वाइन मैम आफ्टर 15 जून. जून के बाद आई कैन ज्वाइन वापस रेगुलर रेगुलर. टाइम. ओके, नो वरीज मैम. आप ना मुझे ऐसे भी पिंग कीजिए. आपका बहुत सारा चैप्टर्स में रिव्यू करवा करवा के डॉक्यूमेंट दे दे के आपको वार्म अप करवा दूंगा. एंड यू कैन डू. एंड मई 15 के बाद जून 15 के अंदर कैन यू गिव वीकेंड्स हाँ. in restricted time में you can give weekends means also I'll cover your things. Okay. And मेरा इंटेंट क्या है मैं बोल दे रहा हूँ. ज्यादा थोड़ा रट्टा मार के जबरदस्ती एग्जाम पास करना वो नहीं चाहता मैं. व्हाट आई वांट इज नेचुरली पतंजलि योग सूत्र याद रखें, बार बार रिपीट करते 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 भागवत गीता याद रखें. आपका सिलेबस में जितना है उतना. ओके, सिलेक्टेड थिंग्स एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके मन को इतना परेशान कर दीजिए. वाइवा में ना बाय डिफॉल्ट निकलेगा मुंह से. और मतलब ये बोल सकते हैं जैसे अभी मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता मीनिंग, 2 मिनट में काम करूंगा मैं हनुमान चालीसा. मतलब हनुमान जी का दीक्षा लिया था फटाफट. गायत्री मंत्र क्या बचपन में मुझे मीनिंग पता था, लेकिन दीक्षा लेके रोज लिखते थे. तो ऐसे 108 गायत्री मंत्र चांटिंग करना मेरा बाएं हाथ का. एंड क्या हनुमान चालीसा इट विल टेक लेस देन 2 मिनट्स. मतलब इतना उसको प्रैक्टिस कर करके कर, मतलब रट्टा भी बोल सकते हो और बचपना बोल सकते हो. रिदम और रिदम पकड़ लिए थे बस. अभी जैसे एक हमारा ये है
आप सुने हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रार्थना एक सुने होंगे, कहीं सुने हो आप लोग? हाँ, मैंने कहीं सुना था, ओके, तो एक बहुत ग्राउंड टफ में है। हुआ था। हाँ, ये बहुत टफ है। लेकिन आपको लग रहा है बचपन में हमें इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता था, थोड़ा बहुत पता था एज ए स्टोरी, बट लिटरल ट्रांसलेशन नहीं पता था। लेकिन जाके जाके रोज गा गा के ना बचपन में खेल कूद में दिमाग में चिपक गया। दैट्स इट। अभी ना मुझे वो मैं आपको दूंगा, अगर आप नए हैं। आई एम आई एम टेलिंग यू डैम श्योर आपको 1-1.5 महीना लगेगा अभी परफेक्ट होने में, उसका रिदम होने के लिए। मैं अभी गा दूंगा, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट नेचर में आ जाता है जब आप रिपीट करोगे। एंड वही गधा मेथड, बैक बेंचर मेथड मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इतना बार उसको रिपीट करवाऊंगा ना, आप लोग का मुंह से बाय डिफॉल्ट निकलेगा वाइवा में। नेक्स्ट। ओके, सो फिजिकल वेलनेस, definitely when mind is calm, okay, your controlled chitta is there, stable mind is there, your focus is better, automatically that will helpful for your mind also, because any disease manifests from mental aspect to physical aspect. So that's why Patanjali Yoga Sutra more speaks on mind. Okay, Prasadanam, positivity. Okay, so reduces anger, jealousy. Okay, reduces anger and jealousy. Spiritual wellness, Nirodha state, self-realization, and this is for inner peace and bliss. Okay, आप अगर निरुद्ध स्टेट में आ जा रहे हो, so you have achieved the ultimate goal. Next, चित्ता, mind field. As I told, manasa, buddhi, ahamkara, chitta. Vritti, okay, vritti, you know all the 5 vrittis, mental modification. Okay, bhumi, bhumi is the states of the mind. Chitta bhumi, Chitta Vikshepa, distractions. Okay, Chitta Prasadanam means purification. So control of chitta through yoga leads to mental balance, emotional stability, and holistic wellness. Okay. अभी आप लोग का क्वेश्चनरी स्टार्ट। ओके, गधा मेथड स्टार्ट नाउ, माई मेथड्स। ओके, हाँ ज्योति मैम आप ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, सुमन मैम और कला मैम को थोड़ा आदत हो गया, आप पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, चित्ता रिफर्स टू क्वेश्चन 1, Mind. माइंड फील्ड। ओके, माइंड फील्ड। So chitta is the total mental field including thoughts and impressions. Shortcut is manasa buddhi ahamkara, MBA. Concept of chitta is given by पतंजलि योग सूत्र। Patanjali, Mahasi Patanjali. सुमन मैम आपके लिए, चित्ता इंक्लूड्स मनस बुद्धि अहंकार। मनस बुद्धि अहंकार। चित्त वृत्ति मीन्स कला मैम आपके लिए Mind modifications. माइंड मॉडिफिकेशंस। बढ़िया। हाँ ज्योति मैम बताइए, 5 वृत्ति बताइए। वृत्ति अहंकार। प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, वो ये निद्रा, तो मैंने बोला स्मृति। था। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत कीजिए, अच्छे से स्कोर करेंगे। काम, नंबर अच्छा, ऑफ ऐसे चित्ता आएगा, वृत्ति, 5 वृत्ति बताइए, ऐसे आएगा क्वेश्चन? मतलब वाइवा में पूछ सकते हैं कि 3 दे देगा और अलग एक देगा, व्हिच इज नॉट ए वृत्ति। सो इन दैट केस आपको ये पता है तो हो गया। ओके, नंबर ऑफ चित्ता वृत्तिस, कला मैम 5. 5। ओके, ये सुमन मैम, व्हिच पतंजलि योग सूत्र स्पीक्स अबाउट 5 वृत्तिस? सर 1.2। नो मैम, 1.2 is yoga has chitta vritti nirodha. Kala ma'am, which Patanjali Yoga Sutra speaks 1, about 5? 1.5 and 6. No, only 1.5. 1.5 will speak like vrittis are 5, they are klishta or aklishta, but the description is given in 1.6, which are the 5 vrittis. So we should say 1.5. Yes. Pramana means Knowing something correctly. no, in the options, Valid Valid knowledge. valid knowledge.
So it is correct perception or knowledge. Viparyaya means, ज्योति मैम बताइए, विपर्याय मीन्स इनकरेक्ट नॉलेज। कहाँ है? यहाँ रॉन्ग नॉलेज ही है ऑप्शन। ओके, स्टिक टू ऑप्शंस। ये ऑप्शन कहाँ है? नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नो। अरे व्हाट हैपेंड? कला मैम आपको नहीं दिख रहा है मेरा ऑप्शन स्क्रीन? दिख रहा है। मे बी आपके सेटिंग्स कुछ। मैम आप सेटिंग्स चेंज कीजिए। ओह, यू आर नॉट वाचिंग माय स्क्रीन। दैट्स व्हाई Change यू आर the स्ट्रगलिंग। page. ज्योति आपको जी, चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर नहीं हो रहा है मुझे पहले बोलिए कि मुझे नहीं दिख रहा है बोल के। मैं सोच रहा हूँ कि वाई। मुझे जस्ट ऐप दिख रहा है। ओह, देखिए तो उसमें ऑप्शन देखिए तो। ठीक है ठीक है, आई एम Change. ट्राइंग। और इफ यू वांट आई कैन रीशेयर अगेन स्क्रीन। हाँ on the screen you see two dots, na? डॉट्स आई कैन नॉट सी। ओके, लेट मी Lower. शेयर अगेन। अरे हाँ अरे, हाँ सॉरी सॉरी। दिख रहा हाँ है? हाँ राइट। Just change. Just scroll ओके right or left. ओके, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है बोल। दैट्स व्हाट मैं ऑप्शंस बोल रहा हूँ, आप कुछ अलग आंसर दे रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। नो ओके वरीज, आई एम नेक्स्ट। आल्सो। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? या और ओके स्क्रीन देखना बहुत जरूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल है। आज जो देख रहे हैं ना, एग्जाम में हाथ जाके उसी ऑप्शन को चूज करेगा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो तो ट्रेनिंग योर दिख रहा ब्रेन। है बट स्क्रीन आई कैन नॉट। ओके, विकल्पा मीन्स इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। ओके, निद्रा मीन्स स्लीप। बहुत इजी है। स्मृति मीन्स Memory. recollection of past experience or your impressions. Chitta Bhumi refers to, Jyoti ma'am. States of mind. नहीं पता नहीं वो देख पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। मैं नहीं देख पा रही हूँ एक्चुअली। आपका नहीं देख। स्क्रीन मैं देख पा रही हूँ बट इट इज वेरी एकदम मिनिमल फॉन्ट में देख पा रही हूँ। आई एम अनेबल टू सी। अभी Go ओके थोड़ा to बड़ा। we go to view and see, make it the full screen. आप कंप्यूटर में बैठे हैं कि मोबाइल से लॉगिन है? लैपटॉप से। लैपटॉप से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आप जहां स्क्रीन शेयर है ना उसको मैक्सिमाइज कीजिए। ओके, आई से जस्ट बेटर आई स्टॉप शेयरिंग अगेन, आई शेयर। तो सर वो राइट साइड में व्यू का एक ऑप्शन है, उसमें फुल स्क्रीन कर सकते हैं तो बड़ा दिखेगा। वेट हाँ आई कैन सी ना। हाँ, नाउ इट्स गुड। पहले बोलना चाहिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नहीं देख रहे बोल। वही मैं देख रहा हूँ कि आप ऑप्शन से बाहर चीज बोल रहे हैं। मैं बोला रॉन्ग नॉलेज ऑप्शन में, जो मेरे यू आर पास सेइंग। लिखा हुआ है आई वाज एक्चुअली टेलिंग यू दैट बिकॉज ओके, मुझे ये नहीं दिख रहा। चित्ता एनीवेज भूमि तो, नाउ हाँ चित्ता भूमि आपके लिए क्वेश्चन था, स्टेट्स ऑफ माइंड। ओके, नाउ मूविंग टू 12th। स्किप द स्टेट इज, ज्योति मैम अभी बताइए। रेस्टलेस आई डोंट नो। यस, रेस्टलेसनेस। इट इज हाईली डिस्ट्रक्टेड माइंड। गुड। एकाग्र स्टेट मींस, सुमन मैम। Focused. फोकस्ड माइंड, वन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट। निरुद्ध स्टेट मींस, कला मैम। कंट्रोल्ड माइंड। Controlled mind, the ultimate goal of our yoga state. Completely controlled mind. Okay, Jyoti ma'am, Chitta Vikshepa means डिस्ट्रैक्शंस। distractions. It refers to obstacles in mind. Suman ma'am, examples of Vikshepa, Laziness. laziness. Laziness, Kala ma'am, Chitta Prasadanam means प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। ये लोग ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, मैक्सिमम ऑप्शन बी ही है, तो आपका दिमाग नहीं लगा के ऑप्शन बी चूज कर दे रहे हो, तो ओके कोई नहीं। लेकिन ये भी है, मैन्युअली टाइप नहीं कर सकता, सब बहुत डिफिकल्ट है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड कामनेस। मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप।
ओके, इवन इफ यू आर लाइक अभी पता चल रहा है बी बोल के, सोच सोच के जवाब दीजिए, क्या होगा ना अभी ब्रेन, मैथली तो इजी हाँ था। हाँ, अभी ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे ना, उस टाइम में बहुत इजी हो जाएगा। उपेक्षा मीन्स, सुमन मैम। Upeksha is balance. Balance. So it is equanimity. Control of chitta leads to Wellness. wellness. बहुत बढ़िया। नाउ जो चीजें थोड़ा मुझे आज थोड़ा मैं मतलब लगा कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर्स को लेके, तो अगेन आई वांट टू डिस्कस द सेम थिंग। पहले पतंजलि योग सूत्र का 12, क्यों ना वो 12 अगर ग्रिप नहीं करेंगे, चैप्टर 2 में 4-5 और चैप्टर 3 विभूति पादा में 3, उतना नहीं करेंगे दिक्कत होगा। एंड आज थोड़ा सीरियल नंबर में आप लोग को दिक्कत हुआ, okay? लेकिन कोई नहीं, को नथिंग टू फील बैड, सब एक्सपर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन अगेन। बताइए पतंजलि योग सूत्र दिख रहा है क्या? यस। सो फिर से बताते हैं इनको, मतलब ऑलमोस्ट आपका माइंड में छप जाना चाहिए। इन क्लासिकल पीरियड महर्षि पतंजलि हैज composed the Patanjali Yoga Sutra or Yoga Darshana. So in that total 196 sutras are there. Okay, महर्षि पतंजलि जी का पूर्व जन्म क्या है? सुमन मैम, सुमन मैम को पता है, मैं ज्योति मैम को पूछना था, सॉरी ज्योति अच्छा, मैम। ओके, कला मैम, महर्षि पतंजलि जी का पूर्व जन्म। ओके, वो किनका अवतार है? हिज इनकारनेशन ऑफ whom? Sheshnag. शेषनाग, लक्ष्मणा। ओके, सो महर्षि पतंजलि द इनकारनेशन ऑफ शेषनाग। और मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ मालूम है? एक्चुअली आई हैवंट स्टडीड एनीवेयर, कहीं एक ऐप में देखा था वो क्वेश्चन और वो मेरा एग्जाम में आ गया, सो आई चूज शेषनाग। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ, बहुत सारे टेक्स्ट में कल कहीं जो मैंने आप वीडियो शेयर करते हो ना योग सूत्रास में, उसमें जो आइडॉल बनी हुई है उसमें भी शेषनाग है। शेषनाग ही है। बहुत बढ़िया, करेक्ट मैम। तो मैम यू आर ऑब्जर्विंग वेरी वेल, ग्रेट। ओके, सो Patanjali Yoga Sutra is divided into 4 chapters. They are calling it as padas. So, Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada, Kaivalya Pada. Okay. Next, come to chapter 1. Sorry, Sutra 1, 1.1. Atha Yoga Anusasanam. So, now begins the discipline of yoga. So, Anusasan. Anusasan matlab discipline. Okay. Atha indicates readiness, auspicious beginning. Yoga starts when the seeker is mentally prepared, discipline and higher knowledge. Next, 1.2. योगः चित्तवृत्ति निरोधः। अगर 1.2 नहीं पता है तो आपको योगा नहीं पता है, एटलीस्ट क्लासिकल योगा तो नहीं पता है। वाईसीबी में आ रहे हैं तो क्लासिकल योगा है, ट्रेडिशनल योगा है, तो ये तो जानना ही है। इवन मैं अभी वाईबी में इतना बार बोल चुका हूँ, वो लोग भी पतंजलि योग सूत्र फटाफट बोल दे रहे हैं अभी। तो हमें ना वही स्टेज में आ जाना है। ओके, बहुत दिन उसको रिपीट करेंगे, हो जाएगा। सो योगा इज नथिंग बट कंट्रोलिंग ऑफ योर वृत्तिस और मेंटल फ्लक्चुएशंस। ओके, सो चित्ता इज माइंड फील्ड, vritti is thought waves, nirodha is controlling. So when mental disturbances stop, true awareness shines. Next, tada drashte sarupe avasthanam. So if you see, last time I have four personalities we discussed. Everywhere self-realization, looking into ourself, and Ramana Maharshi to the last. So that is nothing but sarupe avasthanam. Tada drashte sarupe avasthanam. Then the seer, okay, sets himself, abides himself in the true nature. When you're understanding your true nature and all right, then automatically you are in the like calm mind and you'll understand the pure state of yourself. And that is nothing but
drashta or purusa realizes its pure state when mind is calm. Next, 1.4. Vritti sarupyamita itraha means at the other time, seer or the individual identifies with mental modifications. So we wrongly identify with thoughts, emotions, ego, and that leads us to human suffering. ओके तो जब डिस्टर्ब माइंड में है, मन इधर उधर है, उस टाइम में इफ यू आर टेकिंग समथिंग कॉल, तो वो आपका दुख का कारण बन सकता है. सो जब डिसीजन ले रहे हैं, द डिसीजन शुड बी इन काम माइंड, इन रिलैक्स माइंड. इसीलिए बोलते हैं सुबह लेना चाहिए. नेक्स्ट, कला मैम आपको यही सवाल पूछा था, आप 1.6 बोल दिए. तो देखिए 1.6 में उसका डिस्क्रिप्शन है, पर 1.5 फर्स्ट बोल रहा है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः. So vrittis are 5 and they are painful or non-painful. 1.6 pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayah means whatever 1.5 speaks ki 5 vrittis which are maybe painful or non-painful, klishta or aklishta, those are described in the second one. So the 5 vrittis are right knowledge, wrong knowledge, imagination, sleep, and memory. Next, 1.7. Pratyakshanumana agamaha pramanani means the valid knowledge comes from perception, inference, and testimony. Testimony is evidence. Okay. Inference means you're looking into that, you are analyzing. And perception, you have visualized something or you have some perception in mind, initial thought. And when you are comparing that with the testimony, ज्योति मैम उनको पता है, आप ही सुनना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप ना एक जनरल एग्जाम्पल से रियलाइज कीजिए. आप नेक्स्ट मंथ का बजट कर रहे हैं, आपका घर का, आपका इंडिविजुअल का. आप क्या बोल रहे हैं? मेरा रेंट 5,000 है, मेरा इलेक्ट्रिक बिल 2,000 है, मेरा म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस दिस, मेरा ग्रोसरी एक्सपेंसेस दिस, मेरा कुछ अलग एक्सपेंस. तो आपने क्या किया, नेक्स्ट मंथ के लिए 50,000 अनुमान करके डाल दिया. सो दैट इज नथिंग बट यू हैव परसेप्शन. अभी क्या कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट बिल्स कंपेयर कर रहे हो लास्ट 3 to 6 मंथ्स का. मेरा इलेक्ट्रिक बिल लगभग कितना आ रहा है, 1,500, 1,700, 1,600. सो यू आर टेकिंग एन एवरेज ऑफ लेस देन 2,000. आपका रेंट ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है. साइकिल कंप्लीट होने के बाद 5% बढ़ेगा, बट इन रेगुलर ईयर इट विल बी ऑलमोस्ट, सपोज आज आप 10,000 दे रहे हो, नेक्स्ट मंथ 10,000 दोगे फिक्स. आप क्या किया, एक माइसलेनियस एक्सपेंसेस रखे हो कि मेडिकल आ सकता है, कुछ अलग अचानक खर्चा हो जा सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक 4-5 हजार एक्स्ट्रा रखो. सो आप जब रियलिटी के साथ मैच करके जब उसको दे रहे हो, देन दैट इज वैलिड नॉलेज. क्या है, 48,000 समथिंग आपका खर्चा हुआ, तो दैट इज वैलिड नॉलेज. एक नेक्स्ट मंथ में आप 50 का बजट रखे, 52 हो गया, तो मे भी कुछ इमरजेंसी है, तो आपको क्या है, आपका इमरजेंसी फंड या बैकअप फंड को बढ़ाना है. एंड व्हेन यू आर स्टेइंग इन मेट्रो, जनरली एक एम्प्लॉय माइंडसेट कहता है लिक्विड मनी रखना है. सपोज मेरा महीने का 50 से 55,000, 60,000 के अंदर आ रहा है बजट. सो आई हैव टू सेव एटलीस्ट 3 to 3.5 लाख इन माई अकाउंट. जब मुझे चाहिए इमीडिएटली आई कैन यूज. मैं जितना सेविंग कर लूं, जो भी कर लूं, लिक्विड कैश भी थोड़ा मेरे में रहना. एंड देन आपका वैलिड नॉलेज कब आता है, जब यू आर डूइंग दैट विथ एनालिसिस. लाइक आज हम डेटा साइंस मतलब क्या है, आप 5-6 महीने का डेटा देखते हो, उस डेटा का हिसाब से एक प्रोजेक्शन करता हो, कुछ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स अप्लाई करता हो, एंड यू आर टेकिंग ए कॉल, है ना. तो दैट इज नथिंग बट दिस. नेक्स्ट, आपका ये इलेक्शन में आपका एक आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल क्या है. एग्जिट पोल, सर्वे. हाँ एग्जिट, हाँ सर्वे. तो आप देखोगे तो अभी मेरे स्टेट में सपोज 10 लाख लोग हैं, मैं 10 लाख लोगों का व्यू नहीं ले सकता, लेकिन हवा किधर चल रहा है, मैं ईच स्टेट में, ईच डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो कुछ बूथ का व्यू लूंगा. एंड ऑन दैट डेटा आई विल प्रोजेक्ट की देयर इज ए चांसेस ऑफ विन. सैंपल लेंगे. हाँ, तो मेरा प्रोजेक्शन क्यों, मतलब एक न्यूज चैनल का प्रोजेक्शन क्यों थोड़ा सही होगा, वो लोग कुछ लोगों से जाके बात किए, हवा क्या चल रहा है. हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट का लोकल मुद्दा क्या है, एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी है तो उसका मुद्दा क्या है, हु इज डूइंग गुड, ओके, किसके ऊपर लोगों का एंटी इंक्यूबेंसी है, किसके ऊपर किसके फेवर में जा रहा है, हवा किसके सपोर्ट में है. सो दैट ऑल, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसका इम्पैक्ट कितना है. सो दैट ऑल
considers like your exit poll is little bit real and that is valid knowledge. मतलब आप उसको एग्जैक्ट आने के बाद you are getting valid knowledge, लेकिन तरीका सही है, means you are taking a call on the based on decisions. Next, विपर्याया मिथ्या ज्ञानम तदा दृष्टे परिष्ठम अद अतद्रुप परिष्ठम. ओके, विपर्याय मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम. So wrong knowledge or false perception is something. Other than that, if you are telling something to a object or a person, for example, this is a water bottle. For this, if I'll take cricket bat, so that is not the purpose of this. So automatically that is wrong knowledge. Suppose आपका नाम है ज्योति, आपका कुछ प्रोफाइल है, मैं आपको अगर सुमन जी बोलूंगा तो सही नहीं होगा ना. So आपका रोल नंबर एक यूनिवर्सिटी है एलोकेटेड समथिंग. Other than that, anything I'll tell, you'll not get your result. Next, clerk, स्पेशली आपका क्लर्क जो है वो निकाल नहीं पाएगा आपका डिटेल्स जब तक आप सही रोल नंबर नहीं देते. नेक्स्ट, शब्द ज्ञानानुपति वस्तु शून्य विकल्प 1.9. So without a real object, when you are just following some words, okay, and there only your mistaken happens. Mistake क्यों हो जाता है वहां? Why it will get mistake? अभी नेक्स्ट रूम में या नेक्स्ट कोई अलग टाउन में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अभी गेस कर ले रहा हूँ, समवन टोल्ड कि हाँ वो लोग अच्छे हैं, वो लोग सो रहे हैं, वो लोग अभी खाना खा रहे हैं. सो दैट इज नॉट द डायरेक्ट नॉलेज, दैट इज नॉट ए प्रत्यक्ष नॉलेज. सो जस्ट किसी ने बताया वो वर्ड्स को मैं फॉलो कर ली, बट रियल ऑब्जेक्ट्स मेरे पेरेंट्स अभी मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं उनके सामने नहीं हूँ, देन लिटिल बिट वो रॉन्ग नॉलेज हो जाता. राइट. नेक्स्ट, अभाव प्रत्या आलंबन वृत्तिर निद्रा. निद्रा क्या है? ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वृत्ति जिसमें आपका डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं रहता, तो बेस्ड ऑन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन योग निद्रा इज नॉट दैट. आपको क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है, स्लीप एंड योग निद्रा में क्या डिफरेंस है? दोनों ही वृत्तियां हैं, बट एक में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट लाइक योर कॉन्शियसनेस इज देयर, एंड इन वन यू आर नॉट टोटली योर ऑब्जेक्ट एब्सेंस इज देयर. नेक्स्ट, अनुभूत विषया असंप्रमोसः स्मृति. ओके, सो मेमोरी इज रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट. जब आप कहीं स्पेंड किए हो, पहले कहीं जगह में गए हो, किसी से मिले हो, सो दैट इज स्टोर्ड इन योर चित्ता एंड नाउ यू आर रिकॉलिंग दैट एंड दैट इज नथिंग बट योर स्मृति. 1.12, अभाव वैराग्यभ्यम तन्निरोधः. जब अब तो बोल दे रहे हो कि वृत्ति को कंट्रोल करने से मेरा योग है एंड ऑल, कैसे करोगे? मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये जगह में अच्छा चीज मिलता है, लेकिन उसका पाथ नहीं बताऊंगा, वे नहीं बताऊंगा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, दूंगा, हाउ विल गेट? सो पतंजलि योग सूत्र में उसके ऊपर 1.12 में बताया गया है कि जब आप सही तरीके से रेगुलर एफर्ट डालते हो, प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, एंड डिटैचमेंट जो वैराग्य भाव, आप रिजल्ट्स में मेटेरियलिस्ट चीज में नहीं जुड़ते हो, कोई फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और सीधा कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करते जाते हो, एंड दैट इज नथिंग बट गिव यू द मास्टरी, मेंटल मास्टरी. सो कंसिस्टेंट एफर्ट एंड वैराग्य, नॉन अटैचमेंट. ओके, कोई डाउट? ओके, तो अभी आप बोलोगे सर अभ्यास till 1.5 to 1.12 it's all about vrittis. यस यस मैम. एंड ये भी है, ज्योति मैम को थोड़ा बताना चाहता हूँ. ज्योति मैम, ये अभ्यास वैराग्य आपका इसमें भागवत गीता में भी आता है, तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं है, वहां भी ना अभ्यास वैराग्य एंड ऑल आर देयर. ओके, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है. सर भागवत के भी कोई पर्टिकुलर वो है तो बता दीजिए, फिर वो पढ़ लेते हैं. नहीं, वो अभी ही बताऊंगा, क्यों मालूम है? कंपेयर कर करके भी ना याद रखना सही है, कंपेयर नहीं करेंगे ना भूल जाएंगे फिर. अच्छा ठीक है. ओके, 10 मिनट लूंगा, खत्म हो जाएगा मैम, 5 मिनट. कर्माणे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ए संगत कर्माणि. मीन्स यू हैव द राइट्स टू एक्शन. आपका जो अधिकार है वो काम करने में, उसका रिजल्ट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका संचिता कर्मा में क्या है, आपका कर्म देवता उसमें से कितना काट के आपको दे रहे हैं, कितना डिले में दे रहे हैं,
So that all is again in your karma. So you cannot guess. So a बहुत popular dialogue, and this dialogue is Karma Yoga 2.47 chapter 2 का 47th verse. कर्माणे बाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूमाते. ओके, संगत्व कर्माणि. सो याद रखिए, कर्माणि एक्शन, अधिकारः राइट, फलेषु रिजल्ट्स, संगः अटैचमेंट, अकर्मणि इनएक्शन. ओके, सो ओवरऑल अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, आज के लिए इतना याद रखिए, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स. उतना अगर समझ में आ गया, आपका 2.47 इज क्लियर. सर नेक्स्ट. इसमें संघ को अटैचमेंट का है, मतलब संघ को एज अ ग्रुप नहीं करके अटैचमेंट बोल दिया हाँ, है. जैसे देखिए इसमें एक है पतंजलि योग सूत्र में, मुझे पता नहीं, स्वप्नों को ना यहाँ स्लीप बताया गया. तो सपना एक्चुअली हिंदी में आपका ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स को सपना बोलते, लेकिन यहाँ है. तो उसके हिसाब से हमें संग में जुड़ना, अटैच करना, तो उस हिसाब से बताया गया. तो थोड़ा संस्कृत में मल्टीपल चीजें हैं, वैसे यूज होता है. ओके, नेक्स्ट कम टू अनदर इंपॉर्टेंट वन, मेंटल स्टेबिलिटी 2.56. दुःखेषु अनुद्विग्नाः मानः सुखेषु विगत स्पृहः वित राग भय क्रोध. ओके, वित राग क्रोध भय, राग भय क्रोध, स्थित स्थित धीर धीर मुनिर उच्यते. ओके, धीर मुनिर उच्यते. सो दुःखेषु अनुद्विग्न मानः सुखेषु विगतः श्रीहः नो स्पृहः वित्तराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिर उच्यते. So dukkhesu in sorrow, sukhesu in happiness. Vigata is actually past, but here it is free from. Vigata is free from. Raga, attachment. Bhaya, fear. Krodha, anger. Sthita, dhiya, steady mind. Dhiya means mind. Sthita or sthira means steady mind. So a wise person remains calm in both happiness and sorrow. Chitta And Sthita pragya also will say. So a wise person remains calm in both happiness and sorrow, dukh. Okay? And a single word also, as ma'am told, sthita pragya. Sthita means stable, pragya means knowledge, gyan. So a person, wise person will be calm in both bad and good situations. Balanced life, 6.17. Okay. Yuktahara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta sapna बोधस्य योग भवति दुःखः. सो युक्ता बैलेंस्ड, आहारा फूड, विहारा लाइफस्टाइल. यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, स्वप्न मतलब यहाँ ड्रीम नहीं है, स्लीप. ओके, अवबोधा एवेकफुलनेस और वेकफुलनेस, मतलब शिवम कुंडू जी, शिवम जी यू आर फ्रॉम व्हिच बैच? नया ज्वाइन है क्या शिवम जी? सर मैं काटने के बाद ही टॉकिंग. ओके, युक्ता बैलेंस्ड, आहारा फूड, विहारा लाइफस्टाइल, स्वप्न स्लीप, अवबोधा वेकफुलनेस, योगा डिसिप्लिन, दुःखा रिमूवर ऑफ सरो. ओके, सो बैलेंस इन फूड, एक्टिविटी एंड स्लीप, रिमूव सरो. मीन्स 8:8:8 फॉर्मूला क्या है? 8 घंटे काम करना है, ओवर स्टिमुलेट नहीं करना, 8 घंटा रेस्ट या सोना है अच्छे से, क्योंकि निद्रा भी जरूरी है. एंड आपको बैलेंस फूड, सात्विक आहार, एंड जो बैलेंस डाइट का क्लास था जो हम हथ योगा प्रदीप में देखे थे. सो दैट ऑल आर नथिंग बट योर like ultimate in field of yoga, and it will remove your sorrow. Next, self control 6.5. उदारेद आत्मनात्मनम नत्मनम अभासदयत आत्मैव है आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मः आत्मनः. So उदारेत, uplift,
by oneself. Bandhuhu, friend. Ripuhu, sad ripu also will say enemy. So your mind, if you are positive, it is your best friend. And when you are seeing things negative way, you are projecting something with a false illusion and all in host mind, host you're in the depression time, in your unhappiness time. So your mind only your worst enemy. नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, जो आप लोग को पतंजलि योग सूत्र 1.12 में बताया था, भागवत गीता का चैप्टर 635 में वही चीज है, लेकिन थोड़ा अलग से है. अभ्यासेन त कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते, मीन्स when you are in the practice, abhyasena, kaunteya, hey Arjuna, Kunti Putra, vairagyana, when by detachment, and grihyate means when you are collecting, when you are controlling. So that is nothing but the mind is controlled by practice and detachment. So abhyasena tu kaunteya vairagyana cha grihyate means you will be controlled, you will be collected, you will be in a you can say integrated form. Okay, grihyate is integrated. So when you will do that? By practice and detachment, by abhyasa and vairagya. Okay, now कला मैम पहला क्वेश्चन आपके लिए, who explained the Bhagavad Gita? Krishna. Lord Krishna. Okay, in the battlefield of Kurukshetra to Arjuna. Okay, which parva is that? In Mahabharata it is from which parva? Bhishma parva. Okay? Bhishma parva. नहीं, वो क्यों ऐसे पूछ लेते हैं मालूम है? इवन इफ यू आर आंसरिंग दे विल आस्क लिटिल बिट मोर डेप्थ. तो थोड़ा आपको चेक करने के लिए वाइवा में ऐसे करते हैं लोग. वाइवा आपको पूरा क्लियर रहना. नेक्स्ट, व्हाट डज स्थित प्रज्ञा मीन? सुमन मैम आपके लिए. Stable minded person. Yes, so sthita is stable, prajna is jnana, and when you are in the sthita prajna, stable and knowledgeable, automatically you will be stable minded. Next, sthita prajna means a person with steady wisdom and calm mind. What is niskama karma? Jyoti ma'am. Without attachment to results. Option C. Okay. Which of the following disturbs mental stability? Anger. Huh? Anger. Anger. बहुत बढ़िया. हाँ मैम, निष्कामा कर्मा, कला मैम के लिए क्वेश्चन. मैम, निष्कामा कर्मा भागवत गीता के सिवा कौन से उपनिषद में भी है? बताया था मैं क्लास में. सुमन मैम अटेंड किए कि नहीं पता नहीं, बट आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट और वन ऑफ द डिस्कशंस. ओके, होमवर्क फॉर ऑल. नेक्स्ट, होमवर्क फॉर ऑल. Okay. कौन सा उपनिषद में भी निष्काम कर्म के बारे में बताया गया? थोड़ा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आज ही कर लीजिए, वो एग्जाम के टाइम नहीं करना है. ओके, व्हाट इज आहारा? Food. बहुत बढ़िया. So my next question, if in my Viva you are telling what is ahara, my next question is what is mitahara? सर थोड़ा. थोड़ा सा. 3/4 आप खाएंगे, 1/4 खाली छोड़ेंगे. 1/4 is empty. यस. सो मैम, कला मैम आपके लिए, अगर मिताहारा वो है, युक्ता आहारा क्या है? Yuktagara means proper diet. बैलेंस डाइट. युक्ता एलिजिबल. ओके, ओ मतलब एलिजिबिलिटी अटेंड किया तो युक्त है, युक्त प्रार्थी, तो युक्त आहारा, सो एलिजिबल फूड. So balanced diet should include
Rajasic food also? No. No, only सात्विक आहार एंड युक्त आहार इज, जैसे हथ योगा प्रदीपिका में बताए थे ना, गौवम मतलब गाय का रिलेटेड, तो मिल्क होना है, थोड़ा घी होना है, थोड़ा हल्का मीठा होना है, ओके, but बैलेंस डाइट हो, Rajas ओके, सप्त धातु को नॉरिश करेगा, अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा, नेचुरल स्वीटनेस रहेगा, थोड़ा ऑयल आइटम रहेगा, ओके, दैट ऑल आर युक्त आहार. so due to Rajasic food, mind becomes active. So for creativity and all, activeness is required. यस, बट दैट इज नॉट युक्ताहार और मिताहार. मिताहार कॉन्सेप्ट जितना है उतना बताया कि मिताहार इज स्वल्पाहार, युक्ताहार इज द फूड एलिजिबल फॉर योगी, युक्ताहार. तो युक्ताहार भागवत गीता में है. ओके, नेक्स्ट. देखिए ऐसे आ सकता है, व्हाट इज निद्रा? स्लीप. Sleep. ओके, वन ऑफ द ब्रीथिंग. अगर निद्रा बता दिए, नेक्स्ट वो लोग पूछेंगे व्हाट इज योगा निद्रा? Deep sleep. सॉरी मैम. Deep sleep. नहीं नहीं, योग Yeah. निद्रा वो नहीं. We are we are aware. यस. सो ऑब्जेक्ट. सो योग निद्रा क्या है? विथ अ गाइडेड मेडिटेशन, जस्ट यू आर, Deep meditation stage, हाँ, but we are aware, अवेयर. conscious. तो अवेयरनेस है. तो योग निद्रा में आपका एक ही चीज है, आपको ना पूरा लेट जाना पड़ता है, शवासन में लेट जाते हैं, दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ खोलते हैं, दोनों हाथों को आकाश के मार्ग में या रूप फेसिंग करके रखते हैं, पूरा बॉडी का वेट नीचे डालकर आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देते हैं, देन बॉडी अवेयरनेस करते हैं, स्कैनिंग होल बॉडी, ऑल चक्रास एंड ऑल. और उसके अंदर आपका गाइडेड मेडिटेशन है, यू लिसन सम इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल फॉलो दैट. तो सबसे बेस्ट है बिहार स्कूल ऑफ योगा का योग निद्रा, जो 1.5 से 2 घंटा है. सो डेफिनेटली वो खत्म करने के लिए हमें बहुत क्वालिटी चाहिए. ओके, व्हाट इज ब्रह्मचार्य? सुमन मैम. Discipline and self-control. ओके, सेकंड आश्रम कला मैम. 4 आश्रम में सेकंड आश्रम. Grihasthashram. Yes, बहुत बढ़िया. थर्ड आश्रम ज्योति मैम. ओके, सुमन मैम. Sir, Vanaprasth. वानप्रस्थ, बहुत बढ़िया. चतुर्थ आश्रम कला मैम. Sannyasa. संन्यास. सो ब्रह्मचार्य, ओके, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ओके, अगर इसका जवाब दे रहे हो, बी रेडी कि आपको पैनल से कोई और कुछ पूछ लेगा. ओके, ब्रह्मचार्य मीन्स कंट्रोलिंग सेंसेस एंड लिविंग इन ए डिसिप्लिन लाइफ. अकॉर्डिंग टू गीता, मेंटल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम Self-control. व्हिच चैप्टर डिस्कसेस स्थित प्रज्ञा? ज्योति मैम. अभी तो बताया था. 2. यस. व्हाट हेल्प्स कंट्रोल द माइंड? लास्ट श्लोका. Practice and detachment. ऐसा वैराग्य. तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तो बहुत लिखना है, ये पतंजलि योग सूत्र का है कि भागवत गीता का है, बोलने से अभ्यास और वैराग्य दोनों में है. तो ऑप्शन ए एंड बी ऐसे रहेगा. ओके, सो बी केयरफुल, वो क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है. ओके, अभी शांति पाठ करके क्लोज करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम. हरि ओम. हाँ ज्योति मैम, आपको अगर टाइम नहीं हो रहा है, रात के 9 बजे भी आप लॉग इन हो सकते हो, और एक बैच चलता है. अगर आपका होल डे ऑक्यूपाइड है जुलाई में, यू कैन, जून में यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो. ओके, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, वीकेंड में अगर मैं घर में हूं, तो मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा, वी कैन कनेक्ट फॉर सम टाइम एंड वी कैन कवर. ओके, चलिए.
सर निष्काम कर्म कथा उपनिषद बोल रहे थे आप? सॉरी मैम, निष्काम कर्म और कथा उपनिषद निष्काम कर्म, आपने बोला ना होमवर्क अभी, हाँ सो इज इट कथा उपनिषद? मतलब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट योगा व्हाट यू, हाँ व्हाट यू, वैराग्य इज सेड इन